हेलो स्टूडेंट्स क्लास 9 पिला माने सेमानकर डिस्कशन होतला चैप्टर 11.1 11.1 रो चैप्टर वा 11 को एक्सरसाइज करा होतला तो चैप्टर 11 रे सरफेस एरिया वॉल्यूम थिला सरफेस एरिया वॉल्यूम आको बेसिक फंडामेंटल लागे डिस्कस करियो ताबडी तो मु क्यूबॉइड टा डिटेल्स कहि देथिली तो क्यूबॉइड टा हमर सरियाथला प्रीवियस पे देखिबो तो क्यूब भी डिस्कस हेतला राइट तो एबो करबा कोन तो कोन रे कोन अछि तो देखो एटी कोन रे मु पिक्चर टा करछु फास्ट cone ray this is a cone तो this is RCC मतलब right circular cone this is your circle and this is your vertical height this is vertical height A and this is B and this is C this is your O तो AO is perpendicular to suppose OC BC or OC right. So this is a BC or OC perpendicular. So OC is radius and AO that is height or AO is equal to vertical height. AO is vertical height. Then this is your slant height. AC is the slant height, right? AC is a slant height. So AC is a slant height. AC is a slant height. So AC is a slant height and AO is vertical height. OC is equal to what? OC is equal to radius, this is R, this is your H, this is L. So there is a relation, L is equal to R square plus H square root. By Pythagoras theorem, you know, the Pythagoras hypotenuse square equal to what? That is the radius square plus, that is perpendicular, P square, like that. What? H is equal to what? B square plus P square plus B square root. Okay. So by Pythagoras board देखा जाउछि yes. So by Pythagoras this is your what? Your AOC is right angle, that is why Pythagoras theorem. The P square is P square plus B square equal to H square. P for perpendicular, B for base, H for what? Height. Or that is diagonal, that is hypotenuse. Okay, H for hypotenuse, not height, hypotenuse. But here this is height means slant height, not vertical height. So this slant height is just equal to hypotenuse, act as a hypotenuse, right? Now here in a curve, in a cone, that is why it is RCC. The since it is perpendicular, this is your RCC, right circular cone. Okay. This is your cone. We'll discuss here cone, that is RCC, right circular cone. So right circular cone. जति सर्कल टा तळटा सर्कल लागे टिके तेडा बडा हेतो एटा भी कोन होनी देखो एटा भी कोन होनी कि दिस इज लाइक दिस इटा बडा कोन बट नॉट सर्कुलर कोन. ओके बुझिला तो एटा नॉट आरसीसी, दिस इज नॉट आरसीसी बुझि परछ पूरा बोर्ड देखा जाउछि तो एटा भी नॉट आरसीसी, एटा भी आरसीसी में देखो मार्क करो एटा भी आरसीसी में बिकॉज़ दिस लाइन ए एंगल टा 90 डिग्री नहीं जति रेडियस संगे वर्टिकल हाइट टा जो एंगल बनौछि एटा जति 90 डिग्री जदि 90 डिग्री नथिबो if there is no 90 degree between the radius and vertical height then that is not RCC, right circular cone केबे भी हे परिबो नै. ओके बुझियला एबे हम RCC रे बेस करके RCC ऊपर ही हमें सब तक फार्मूला बाहर करबा राइट. तो दिस इज आल्सो नॉट RCC, दिस इज नॉट RCC सरियला. नेक्स्ट ମୁଁ ତାର ସବୁତକ ଫର୍ମୁଲା ସେଟିଂ କରୁଛି ଏତେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଦେନ୍ CSA pi r l then PSA
plane surface area, that is pi r square, and TSA, that is equal to pi r l plus pi r square. So pi r l plus pi r square, that is equal to total surface area. Okay. Now এই যে দুইটা অ্যাঙ্গেল হলো এই যে সাইড তিনটা ফর্মুলা that is curved surface area, plane surface area and total surface area. Curved surface area, plane surface area and total surface area. Clear? Okay. CSA, PSA and TSA. CSA, PSA and TSA. Okay. এই তিনটা একটা ফর্মুলা আর হলো ভলিউম। আর হলো ভলিউম that is equal to pi r square h. Pi r square h. Clear? Then এই pi r square la ভলিউম এই চারিটা ফর্মুলা কাউন্ট হয়ে গেল অলমোস্ট। ওকে। এইটা যে পার্টটা এই পার্ট হলো pi r square মার্ক করো। এই পার্ট হলো pi r square, এটা হলো 2 pi r pi r l, CSA, এটা PSA, এটা CSA, রাইট? তো PSA plane surface area, CSA curved surface area, PSA is equal to pi r square, PSA pi r square, curved surface area that is your what? CSA curved surface area that is pi r l, this is your pi r square, pi r l, pi r square, pi r l. So pi r l and pi r square together मिसिले हवा TSA total surface area, then volume pi r square into h, pi r square into h. This is 1 by 3 pi r square by 3. Sorry. So this is pi r square h by 3. Okay. So volume is pi r square h by 3 because actually there is a confusion will come. What? Sometimes confusion. This is actually cylinder. In cylinder, that is equal to volume is equal to pi r square h. Cylinder रे देखिए बच्चों cylinder रे हला pi r square h. तो मुझ सॉरी मैंने बाय मिस्टेक कह दिली এটা আসলে मैंने कह दिली pi r square h cylinder रे वॉल्यूम. ओके. तो 1 by 3 pi r square h, that is 1 by 3 pi r square ला that is volume of the cone. तो volume of the cone 1 by 3 pi r square h, the volume of the cylinder that is pi r square h. ओके. तो गोटे सिलिंडर को गैस कर दो, सिलिंडर रो तीन पार्ट हला, तीनटा पार्ट अछि, गोटे पार्ट ला 1 by 3 pi r square h हला, that is cone. क्लियर ହେଲା? तो चारटा फॉर्मूला CSA, PSA, TSA, volume. Clear? And another is here this one. And L is equal to h square plus r square root. ये है तीन फॉर्मूला और टोटल दिस इज फॉर्मूला. ओके. सरीगला ये कौन से डिटेल्स वाला आपको हमें यूज करवा नेक्स्ट वीडियो में करवा. ओके. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.